Let me do a brief introduction. Nidarshana Ramesh Gowani, she's the founder and trustee of the Kamala, Ankibai, Ghamandiram, Gowani Trust. Nidarshana ma'am, thank you so much for speaking on an issue that I feel more time and more space needs to be given on. And let me start by asking you, in terms of the role that philanthropy can play in terms of शेपिंग आवर सोसाइटी, किस तरह से क्या भूमिका निभाई जा सकती है फिलैंथ्रोपी की, जो हमारी सोसाइटी है, हमारे समाज में कितना कितना अहम है उसका रोल. First of all, thank you for having me. Thank you everyone. So, as I told you, that first of all, whatever we do in life, we have to be very sure. So, if we are doing a social work or if we are trying to connect somebody with us, we have to be honest to ourselves. तो जो आपने सब्जेक्ट बोला है कि किस तरह, तो पहली चीज़ आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप सोल कनेक्ट नहीं करते हो, आप किसी के साथ काम नहीं कर सकते हो. और ये बहुत वीकर सेक्टर्स हैं जिसको एम्पावर करने के हम सबको बहुत मजबूती देने की ज़रूरत है. आज हम सब ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास सब कुछ है, पर ऐसे बहुत लोग इस समाज में हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं है. सो ऐसे सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना, ट्राइबल सेक्टर है, जैसे हम ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करते हैं, सेक्स वर्कर्स के साथ काम करते हैं, HVP वैक्सीन पे बहुत काम करते हैं, जो कि मेजर इशू है आज की तारीख में. हर एक इंसान, हर एक 3 घर छोड़कर आपको मालूम पड़ता है समबडी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, किसी को कैंसर हुआ है. तो रेडियोलॉजी जब 1960 में मेरे नाना डीन थे, तब कोई रेडियोलॉजी समझता नहीं था. जैसे आई स्पोक टू यू एंड आई टोल्ड यू कि रेडियोलॉजी किसी को समझती नहीं थी कि कैंसर भी कोई बीमारी हो सकती है हमारे देश में. पर जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है हमें हमारे बच्चों को HVP वैक्सीन देना और ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें दिलाना बहुत ज़रूरी है. जी, और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आपको लगता है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि फिलैंथ्रोपी एक बहुत बहुत वास्ट चीज़ है. आपके दिल के करीब ऐसे कौन से एरिया हैं जिसमें आपको लगता है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत? सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ जो बाहर के क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई सिटी की हूँ मैं, दिल्ली मुंबई में तो काफ़ी लोग हैं जो सोशल वर्क के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत इजी होता है कि हमारे बच्चों का जन्मदिन है तो चलिए आज सोशल वर्क कर लेते हैं, आज एनिवर्सरी है तो चलिए कुछ अच्छा कर लेते हैं, आज मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है तो चलिए कुछ डोनेशन कर देते हैं. पर ये हम हमारा रोज़ क्यों नहीं कर सकते? अगर हम इतना कुछ सोसाइटी से ले रहे हैं तो सोसाइटी को दे क्यों नहीं सकते? हम इसको डेली मतलब डेली पर मंथ, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से, शॉपिंग जाते हैं, तो थोड़ा सा हम सोसाइटी को गिव बैक क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे लगता है कि बाहर, जैसे यूपी में सोनभद्र है, अयोध्या है, अयोध्या में हमने स्किल डेवलपमेंट खोला और वहाँ पे 99 औरतों को सक्षम बनाया. जी, तो उनको भी HVP वैक्सीनेशन या कैंसर अवेयरनेस कैंप्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. उनको आप हाथ लगाने जाओ तो वो भागती हैं, हमें कोई बीमारी नहीं, हम एकदम ठीक हैं, ये उनका डायलॉग रहता है, क्योंकि वो जानती नहीं है कि ये कितनी भयंकर बीमारी है और ये किसी को भी हो सकती है. तो उनकी उतनी ही एजुकेशन है, उतनी ही अवेयरनेस है. तो बहुत सारे इस तरह के ट्राइबल एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है जिनको नहीं है, जैसे उत्तराखंड के इंटीरियर्स हैं. आदिवासी क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है सूचना नहीं पहुँच पाती है, वो सारी जानकारी नहीं मिल पाती है जो आज की तारीख पे मिलनी चाहिए. लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, मुझे लगता है अगर हम इसे फिलैंथ्रोपी में यूज़ करें, बहुत बहुत इसका फ़ायदा हो सकता है. मेरे को जो समझ में आ रहा है, पहली चीज़ तो ये कि जितने हम साधन लगा रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चल सकता है. पर इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी ने अपना बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ज़रूरी भी है. जैसे पहले हम जब डोनेशंस करते थे तो बड़े बूढ़े कहते थे एक हाथ से करो दूसरे को पता ना चले, पर अब ज़माना बदल गया है. जब तक आप दूसरे हाथ को बताओगे नहीं, आपकी जनरेशन कुछ सीख नहीं पाएगी. अब गूगल का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है. जैसे आज हमें कोई ब्रांड लॉन्च करना है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब यूज़ करते हैं. उसी तरह से अगर आपको सोशल वर्क करना है और अगर आप राइट चीज़ नहीं दिखाओगे यंगस्टर्स को कि क्या चल रहा है और किसको कितनी तकलीफ़ है, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि हमें सोसाइटी में क्या चेंज लाना है. जैसे कल मोदी जी ने कहा इंडिया इज़ ग्रोइंग, बढ़ रहा है, विकसित भारत है. तो विकसित भारत को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ने काफ़ी मदद की है और टेक्नोलॉजी को यूज़ भी करना चाहिए.
कुछ लोग हैं जो उसका फ़ायदा गलत उठाते हैं कि अपने आप को फेमस करने के लिए सोशल वर्क दिखाते हैं, पर जो जेन्यून है, जैसे वो कहावत है, यू कैन फूल मी वंस ट्वाइस बट नॉट थ्राइस, तो वैसे ही जो एक्चुअल रियल सोशल वर्क कर रहे हैं वो आपको दिखेगा और उससे यंगस्टर्स भी सीखते हैं और काफ़ी उनका भी ब्रेन स्ट्रांग होता है कि वी शुड गिव बैक टू सोसाइटी। जी, आपकी संस्था विभिन्न समुदायों में तरह तरह के लोगों के साथ काम करती है। आपको क्या लगता है कि जो इस देश की विविधताएं हैं, इस देश की जो विभिन्नताएं हैं, उसका क्या असर पड़ता है हमारी फिलैंथ्रोपिक अप्रोच में? क्योंकि वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आप बताइए, आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, जब हम लोग ट्रांसजेंडर के साथ काम करते हैं तो उनकी अपनी काफ़ी नाराज़गियाँ रहती हैं कि हमें कोई समाज में रिस्पेक्ट नहीं देता है। और सच्ची बात है कि अब वो वैसे नहीं रहे कि रोड पर बेगिंग करें या भीख मांगे कि आप हमें 2 पैसे दे दीजिए। वो भी एजुकेट हो रहे हैं। काफ़ी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो बैक डांसर ट्रांसजेंडर है, दे लुक मच प्रिटियर नाउ, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो उनकी नाराज़गी है कि उनको राइट्स नहीं मिलते, उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलते हैं, जिसके लिए हमें उनको हेल्प करना चाहिए। क्योंकि जैसे सब क्षेत्र में लोगों को काम मिल रहा है तो उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर सेक्स वर्कर्स हैं, वो भी एक बड़ा अहम हिस्सा है हमारी सोसाइटी का। उनको देख के हम लोग हमेशा मुंह फेर लेते हैं कि क्यों हम उनकी मदद करें। वो अपने नीड्स के लिए ये काम कर रहे हैं, उनके शौक़ से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है एक औरत होने के नाते हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी मजबूरी से ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि ये जो स्टिग्मा है, जब तक ये स्टिग्मा नहीं हटेगा तब तक उनकी मदद, उनके लिए राहत, उनके लिए अलग अलग तरह की स्कीम किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर, जैसे हम उनको काफ़ी इंटरव्यू भी करते हैं, आप उनकी स्टोरीज सुने तो वो अपना गांव छोड़कर आते हैं, अपने फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान दे रहे हैं और उनकी फैमिली को पता भी नहीं है कि वो शहर में क्या काम कर रहे हैं। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट जो बोलते हैं ना, वो अपने घर को एम्पावर कर रहे हैं। हम उससे देखते गलत नज़र से, माँ दुर्गा की मिट्टी के लिए भी हम उनकी मिट्टी घर की यूज़ करते हैं। और सप्तशती के भी रहस्य में दिया हुआ है, अगर आप सप्तशती से यहाँ पर किसी को भी थोड़ा पढ़ते हो तो अगर पढ़ें भी तो रहस्य में, तीसरे रहस्य में ये दिया है कि एक रूप माँ का, एक रूप औरत का, भगवान का, सेक्स वर्कर भी हैं, जो अगर नहीं हो तो हमारी सृष्टि पूरी नहीं है। और मेरा ये कहना है, मैं मेरी डॉटर है, एक मदर हूँ मैं, कि अगर वो नहीं है तो मेरी डॉटर, किसी की भी डॉटर सेफ़ नहीं है। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है जिसके लिए करना चाहिए। हम उनकी एफडीज करते हैं जी। सरकारी जो अभी योजना आई है, उस योजना के तहत हम पोस्ट ऑफिस से उनकी एफडीज करते हैं कि उस एफडी 3 साल बाद जब मैच्योर हो तो वो अपना बिजनेस कर सकें। आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस देश की युवा शक्ति के लिए कैसे युवाओं का योगदान बढ़ाया जा सकता है परोपकार के लिए, फिलैंथ्रोपी के लिए? किस तरह से उनकी ऊर्जा को जोड़ा जा सकता है ताकि इस काम में ज़्यादा अलग अलग तरह की थॉट प्रोसेस आ सकें और नई ऊर्जा आ सके? ये सब आपके अपने संस्कारों पे निर्भर होता है। आप जैसे अपने घर में अपने सर्वेंट से बात करेंगे वैसे आपके बच्चे बात करेंगे। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर आप अपने घर की बाई को दीदी बोलेंगे तो आपके बच्चे दीदी बोलेंगे। अगर आप उनकी तकलीफ़ समझकर उनको हेल्प करेंगे तो आपके बच्चे हेल्प करेंगे। तो जो कुछ हम करते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारे बच्चे करते हैं। अगर आप सोशल वर्क करते हैं, जिस तरह से आप अपने लिए हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल साइड करते हैं, शॉपिंग के लिए एक बजट बनाते हैं, वैसे अगर आप सोशल वर्क डोनेशंस करेंगे तो वो लेगेसी आपके बच्चे लेकर जाएंगे कि नहीं, हमारे फादर, हमारी मदर सेविंग से ये पैसा इसको डोनेट करती थी। जो भी अमाउंट हो, हर इंसान अपने हिसाब से कर सकता है, तो वो बच्चे सीखेंगे। और यूथ आज का हम सबसे बहुत समझदार है, हम लोगों से बहुत स्मार्ट है और बहुत मैच्योर है। उनके अंदर ऑलरेडी बहुत दया भाव है जी। तो अगर आप उन्हें राइट डायरेक्शन देंगे तो वो बहुत चेंज लाएंगे सोसाइटी में। बिल्कुल बिल्कुल निदर्शना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो आपने कहा वो एक बहुत अहम हिस्सा है। भारत को आगे बढ़ना है, प्रगति के रास्ते पे जाना है तो वंचित वर्गों को आगे लेके चलना पड़ेगा और सारा भार सरकारें नहीं उठा सकती, नहीं। उसका बहुत बड़ा भार हमको भी उठाना पड़ेगा बहुत। और हमारे जैसे सोशल वर्क जो करते हैं, जिनकी ट्रस्ट है, खुद की फैमिली ट्रस्ट है, CSR फंडिंग्स है, अगर हम उन सरकार के साथ मिलके काम करें
तो एक बहुत बड़ा चेंज सोसाइटी में आ सकता है। बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। When the whole day passes like a blur, the news just whizzes past, and you're trying to stay informed. It is our job to bring you news that truly matters. At Profit 360, we cut through the clutter, the Wall Street deals, finance and policy news that could shape your tomorrow. The newsmakers, the trendsetters, and the innovators. In 30 minutes, we've got you covered. So stay ahead, stay informed, and stay profitable with Profit 360. Headlines you start your day with. What matters worldwide is now in the palm of your hands. Get ready to seize the day and maximize your financial potential. Stay ahead of the curve with all you need to know on NDTV Profit. Listen to the voices of reason as they talk about corporate health and investing principles with me, Nidarshana, on my show, Talking Point. Bro, what are you doing? I'm trading FNOs. So, have you made any money? Oh, it's simple. If you think the market is moving upwards, just buy Nifty call option. But if you think the market could slide downwards, simplifying futures and options trading. Don't worry about the future. We've got your options covered. Futures and options strategy that will help you move with the tide. An unmissable trade. If you want to be in the money. When the whole day passes like a blur, the news just whizzes past, and you're trying to stay informed. It is our job to bring you news that truly matters. At Profit 360, we cut through the clutter, the Wall Street deals, finance and policy news that could shape your tomorrow. The newsmakers, the trendsetters, and the innovators. In 30 minutes, we've got you covered. So stay ahead, stay informed, and stay profitable with Profit 360. Headlines you start your day with. What matters worldwide is now in the palm of your hands. Get ready to seize the day and maximize your financial potential. Stay ahead of the curve with all you need to know on NDTV Profit. Listen to the voices of reason as they talk about corporate health and investing principles with me, Nidarshana, on my show, Talking Point. Bro, what are you doing? I'm trading FNOs. So, have you made any money? Oh, it's simple. If you think the market is moving upwards, just buy Nifty call option. But if you think the market could slide downwards, Simplifying futures and options trading. Don't worry about the future. We've got your options covered. Futures and options strategy that will help you move with the tide. An unmissable trade. If you want to be in the money.
today with Lalit Keshre. He's co-founder and CEO of Groww. And for those of you who don't know or are living under the rock, Groww is one of the fastest growing platforms for financial inclusion, for trading, giving quite a bit of challenge to other big players out there. Lalit, we're very excited to speak with you at the NDTV World Summit. Let's start with the story of Groww. Tell us, of course, you started in 2016. That was a time, markets have been in a bull run for a while, undoubtedly, but that was a time when I think online trading had not become as prevalent perhaps as today. Yes. What was the idea behind it, the thought process? Got it. So we were working with Flipkart, and personally I started investing like when I was in second year of my college here in Bombay around 2000, 2001, right? So was really passionate about investing and found a good set of folks, three awesome co-founders, all were passionate about financial services and so on. And we saw that we were also lucky to see how e-commerce grew in India, right? Everything becoming online and so on. And then we looked at the penetration of, how many people are investing in India, mutual funds, stocks, and so on. And then we saw like on Nifty 50, the constituents of financial services is like very large part of everything. And in the hindsight, if I see a lot of dots connected, right? And there was this opportunity to kind of create a crazy big impact, leveraging our technology to reach out to like millions of customers, millions of people across India. So that was the starting point. Did you expect this kind of a trajectory, or that there would be this huge quantum of Indians across, it's not just middle class Indians, everyone now has some equity exposure or the other. The boom has been immense. Did you expect that to happen, or do you think that that's something which came about in a post-COVID era? You were in the right place, right time to ride the wave. If we compare with 2016, right, bunch of things played a very big role. So there were some signals that, this wave, like this is a very, very kind of long-term wave and there's India's time and so on. Of course, there were plans and so on, but I think we were lucky, yeah. Yeah, so right time, right place. Right now, there are also concerns, Lalit. I just want to understand what is the kind of volumes you see on a platform like Groww? Have you seen a lot of interest or excitement about weekly futures and options, for example, and the impact that you see of that coming down? You see, Groww is a kind of very broad-based platform. It has like number of products. Sure. We have mutual funds, stocks, and then of course derivatives. There are like 15 to 20% of our customers who do derivatives as well. There are certain things where customer protection is very, very important. So from that perspective, I think we are in the right direction. Your first question about will it impact? Of course it will impact, but how much, what will be degree? I mean, your guess would be as good as mine or anybody, because there are a lot of second order, third order effects of any rule that comes into picture and any kind of change that happens, right? So we don't know about that, but of course there would be some impact. Yeah. Give us a sense of the kind of growth we have seen in equity investment across India, and because you're at a position where you can get that expanse. So internet plus Aadhaar, UPI, like they have like lowered the kind of barriers like anything, and then folks like us came who made it very easy, very transparent, and a lot of education campaigns and so on. You go to any like tier 2, tier 3 town, a lot of customers today are coming from like smaller cities. Why? Because all the information arbitrage that was missing, like now it's available to everybody at their fingertips. You can open Groww app and see, what is a mutual fund, what is a stock, what are the related parameters about them, what is their fundamentals, what are technicals, like anything, whatever you want is available. Lalit, we have seen in the last few years a lot of startups and young companies choosing to headquarter outside India for tax reasons, etc. We are seeing right now a trend of a ghar vapsi, in a sense, and your company is one of them that has now decided to move your headquarters out of US to India. So first of all, congratulations on that. Thank you. And tell us why. You see, Groww is an Indian company.
customers are in India, management is in India, all operations are in India. So it did not make sense to kind of be outside India. We had to go, we were a YC company, so we had to register in the US, but now there is no reason why we should not be in India. What do you think is the next big phase of growth? Will it continue to be mutual funds? Will it be IPOs? And will this confidence of investors sustain? Very hard to predict the future. We will come to know. On the next products, I think mutual fund is the most beautiful product for retail investors, at least, right? And then there's a lot of innovation that is going to happen there as well. Penetration is still very low. Like we compare ourselves with, let's say, 2016 or 2020 and so on. But if we compare with other countries, then it's still like very low. Like people are still kind of not beating inflation, right? And retirement problem is still not solved and so on. So there's like still long way to go. Yeah, but you're also in a very competitive space because the moat is low, right? Because the digital infrastructure exists. You have a fair number of platforms that make it very easy for you to invest at a click of a button on your phone while you're traveling. How does Groww aim to remain head and shoulders above or have a competitive edge? See, the biggest thing about financial services is trust, right? You're compounding trust. And I mean, if you continue serving customer really well, if you continue kind of being on the side of the customer all the time and keep compounding that trust, I think that's the brand that you create. Or like there is a saying in our product world where, customer need is always ahead of you and you are just running to kind of meet it. And my strong belief is that if you continue doing that, and other thing is like there is a big playground here. Like India is a big playground right now. Like India growth story is like multi-decade story is what like you have to believe, right? So what is the next big exciting announcement we're going to be hearing from Groww? I would be very happy to tell if we kind of work that way. But so the way we work is like we work on bunch of things, right? There are a lot of customer feedback that we keep getting. So we go out and meet customers. Like I personally travel across the country, meet like customers in all the cities and so on. And then we invite customers and we come with like hundreds of ideas from those, and then we kind of keep churning them. So it's like more like an innovation factory than one big idea that I can announce here and tell this is going to happen. So it's kind of very boring under the hood, but then what comes out is like much more exciting for customers. So in general, in consumer product, it's very difficult to find what customers want, right? You will have to use various tools, but in our business, at least, that is like very, very, so we are grateful to customers in kind of, talking about all the things that they want on the platform. But is the biggest area to work on for the industry as a whole on smoother transactions and more tech-enabled transactions? What is the next leg? There's a lot of investment that is needed. See, infrastructure is very complicated. So like we have almost like 400 engineers working on just that, kind of getting things like very perfect, because it's about customers' hard-earned money. And that's like the promise, like reliability becomes the number one kind of item in your roadmap all the time, right? And rest everything is secondary. Fantastic. Thank you so much, Lalit. This is truly an example of innovation driving a business that is growing, a hallmark of growing India. Thank you so much. Thank you so much. When the whole day passes like a blur, the news just whizzes past, and you're trying to stay informed. It is our job to bring you news that truly matters. At Profit 360, we cut through the clutter, the Wall Street deals, finance and policy news that could shape your tomorrow, the newsmakers, the trendsetters, and the innovators. In 30 minutes, we've got you covered. So stay ahead,
Stay informed and stay profitable with Profit 360. Headlines you start your day with. What matters worldwide is now in the palm of your hands. Get ready to seize the day and maximize